on the ground that the सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाना वैलिड है, ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 370 को वो हटा सकते हैं, यानी कि 370 को जब हटाया गया वो वैलिड था, यानी कि कोर्ट ने इस बात को माना है। लेकिन ये एक जजमेंट है जो जस्टिस जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का डिसीजन है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 370 को हटाना प्रेसिडेंट के रूल के अंडर आता है, यानी कि प्रेसिडेंट उसको कर सकते हैं। कोर्ट ने उसको वैलिड माना है। इसके अलावा कि ये पूरा जो आर्टिकल 370 जिसको हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में अप्लाई होता है, और इसके अलावा जो डिसइंटीग्रेशन किया गया है वो क्या हर जगह अप्लाई होता है, उस पर कोर्ट फैसला सुना रहा है। लेकिन ये बड़ी बात इस वक्त कोर्ट की तरफ से ये कही गई है, जिसमें कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोर्ट कैन नॉट सिट ऑन एन अपील ओवर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो फैसला लिया है जिसमें उन्होंने 370 को हटाया, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया, कोर्ट उस पर बैठकर सुनवाई नहीं कर सकता है, कोर्ट उस अपील पर बैठकर फैसला नहीं सुना सकता है, यानी कि कोर्ट ने इस बात को वैध माना है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना सही था। Third, since the effect of applying all the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir, to Jammu and Kashmir through the exercise of the power under Article 371D is the same as issuing a notification under Article 370 Clause 3, which the President has the power to unilaterally issue, the principle of consultation and collaboration and not required to be followed. Fourth, the exercise of power is mala fide only if power was exercised with an intent to deceive. Deception can only be proved if the power which is otherwise unavailable to the authority or body is exercised, or if the power that is available is improperly exercised. Since the concurrence of the state government was not required for the exercise of power under Article 370(1)(d) to apply all provisions of the Constitution to the state, the President securing the concurrence of the Union of India on behalf of the state government is not mala fide. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that it is ultra vires Article 370(1)(d) because it modifies Article 370. We have held that the modification by CO 272 to Article 367 as it applies to Jammu and Kashmir had the effect of amending Article 370 and is thus ultra vires Article 370(1)(d). We have reached this conclusion for the following reasons. First, recourse must be had to the procedure contemplated by Article 370 Clause 3 if Article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of Jammu and Kashmir. No other procedure may be utilized to amend Article 370. Second, the rule of interpretation that a power under a statute must be exercised in accordance with the provisions of that statute and in no other manner is undoubtedly applicable to the Constitution. Third, from precedent, including Shankari Prasad Singh, Sajjan Singh, Kihoto Holohan, and Rajendra Shah, it emerges that the following aspects are of significance when assessing whether a change has been made to a provision of the Constitution. 1. A change may be either in terms of or in its effect. 2. A change can be said to have been made even if the language of the concerned provision is not directly amended by adding, subtracting, or modifying the language. This is a change in effect. And 3. If the effect of an amendment is to change a provision, such effect must be significant or appreciable. And 4. The substance of a change is more important than its form. Second, an assessment of whether a constitutional order amounts to a modification and consequently whether the procedure under Article 370 Clause 1 or under Article 370 Clause 3 ought to have been followed depends on this standard. Third, the effect of a provision of law is as important as its form. While the change sought to be made by paragraph 2 of CO 272, आपको बता दें 370 हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि यह फैसला सही था, ये एक टेम्पररी प्रोविजन था और इस पर ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी गौनिका दे रही है। गौनिका, सबसे बड़ी बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि 370 ये एक टेम्पररी प्रोविजन था और इसे हटाने का फैसला केंद्र सरकार का सही था। बिल्कुल मीनाक्षी, ये सवाल उठाए गए थे प्रेसिडेंट की
मंशा पर सवाल उठाए गए थे कि वो मैलाफाइड है, लेकिन अब कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि प्रेसिडेंट की मंशा बिल्कुल भी मैलाफाइड नहीं थी, क्योंकि एक टेम्परेरी प्रोविजन था, इसको हटाया ही जाना था। इसीलिए इसको हटाया जाने के पीछे जो प्रेसिडेंट की मंशा थी वो बिल्कुल भी मैलाफाइड नहीं थी। ये वर्ड यूज किया है कोर्ट ने, यानी किसी भी तरीके की कोई भी गलत मंशा इस आर्टिकल 370 को हटाए जाने के पीछे नहीं थी। ये कोर्ट ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑल द प्रोविजन, यानी कि ये बार बार सुनवाई के दौरान कहा जा रहा था कि अगर किसी भी तरीके का प्रोविजन यानी कि 370 को अगर हटाया जाना है और इसके अलावा डिसइंटीग्रेशन करना है तो इन सब चीजों को लेकर जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति होनी जरूरी होती है। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट की सहमति की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 370 को प्रेसिडेंट खुद अपनी मर्जी से हटा सकते हैं और उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया, क्योंकि ये टेम्परेरी प्रोविजन था। ये सिर्फ वॉर के क्राइसिस के दौरान उस वक्त ये फैसला लिया गया था कि 370 अप्लाई किया जाए, लेकिन वो 370 तब सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाती उसको हटाया जाना था, लेकिन वो क्योंकि सिचुएशन लगातार वैसी बनी रही जिसके बाद इसको हटाया नहीं गया। लेकिन क्योंकि ये टेम्परेरी प्रोविजन था, इसको हटाया जाना था और इसको हटाया गया और इस फैसले को कोर्ट ने सही करार दिया। तो